friend, welcome to my YouTube channel, that is Blooming Maths. Nowadays children are getting confused in common multiple strategy and in common division strategy for LCM and HCF. Now today's topic is LCM by both the method. What is the difference between common multiple strategy and common division strategy? Now we compare both the method, common multiple strategy, so that you will get the difference, and another is common division strategy. सपोज हम नंबर लेते हैं 6 and 8. हमने नंबर लिया 6 and 8. हम दोनों में ही वही सेम नंबर लेंगे और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्ट्रेटजी वी विल फाइंड इट आउट दैट. अगर हम कॉमन मल्टीपल स्ट्रेटजी ले रहे हैं तो मतलब है हमें मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 8 लिखना है. हम उसके मल्टीपल्स लिखेंगे. मल्टीपल का मतलब क्या होता है? टेबल ऑफ दैट नंबर. लाइक 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, then 36, 42, 48, 54 and 60. Same with 8. We are writing the multiple of 8. 88, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 and 80. Now we will find out the common multiples in both the numbers which we have written ना. multiples इनमें से common निकालना है. How to find out the common? जो दोनों tables में आता है. Like 24 comes in the table of 6 also and 8 also. Next is 48. 48 comes in the table of 6 also and 8 also. Now we will write down what are the common multiples. Multiples are 24 and 48. ठीक है, तो इससे हमारा LCM. LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर, दैट इज 24. नाउ नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज कॉमन डिवीजन स्ट्रेटेजी. कॉमन डिवीजन स्ट्रेटेजी का मतलब हम इन नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से. लाइक आई एम टेकिंग अप इन विच टेबल बोथ कम्स इन 2. 6 divided by 2 is 3. 8 divided by 2 is 4. Now again we'll take up 2. 3 not comes in the table of 2, so we'll write down as it is. 4 divided by 2 is 2. Again 2. 3 not comes in the table of 2. 2 ones are 2. Or 2 divided by 2 is 1. Now we'll take up 3. 3 ones are 3. Now the LCM by this is 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3. What are the factors which divides this number? We will take up that. अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 2 2s are 4. 4 is the answer of these two numbers multiplication. अब 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 2s are 8. 8 3s are 24. तो हमारे पास LCM क्या आएगा? 24. The method is different, but the answer of by any method we will find out it will be same. Thank you and have a nice day.